हूँ। उसामा सर एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। जी, आप कल तो मैं कर सक रहा था लेकिन आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है। वैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी है। चल बस ठीक, फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है फिर आपने अपलोड कर देनी है इस पे टीम्स पे कर दीजिएगा। मैं फिर टीम से डाउनलोड करके मैं इसको LMS पे भी लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू बेटा। Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we started computation of fast Fourier transform, which is chapter 9 of your book Oppenheim and Schiffer. And we started with the discussion that it's not a new transform, rather it's a way of computing the DFT in a faster fashion. And it was invented initially by Gauss in 19th century, but it was the computational restraints which didn't allow Gauss to use that fast Fourier transform algorithm at that time. But in 1960s, Cooley and Tukey, in fact, rediscovered the algorithm and computed this DFT in a faster fashion. And the main idea behind this algorithm is divide and conquer. And divide and conquer means that if we have to perform an endpoint FFT, then endpoint FFT is split into two n over 2 point DFTs or FFTs, and then that is split into n over 4 point DFTs, and then it is broken into n over 8 point DFTs till the time we reach the 2 point DFTs. So FFT can be computed in two ways: decimation in time and decimation in frequency. So ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे, तो what's the motivation of using DFTs, and then we talked about this, that what's the number of multiplications and additions in calculating n values of x of k. Now, if this is your x of k, which is by definition is the expression for computing your FFT, x of k n is equal to 0 to n minus 1 x of n w n k n. In that case, just for one value of x of k, that is, if you are going for computing x of 0, in that case you need n multiplications and n minus 1 additions. And if you are up to calculating all the n values of x of k, because k is between 0 to n minus 1, in that case you will be doing n square multiplications and n minus 1 square additions. So that's the computational load x of k is carrying. And we are saying that we will be doing all this, the fast Fourier transform, the new method of the method of computing DFT in a faster way. So it means we will be having computational effort जो है, that would be reduced in this case of fast Fourier transform. Probably यहाँ तक किया था. Yes, sir. Okay, Shahroz क्या हाल है बेटा? Alhamdulillah, sir. Okay, great. So let's start decimation in time. Decimation in times mean we are breaking in x of n samples जो हैं उनको हम break कर रहे हैं. So we know that x of k is equal to n is equal to 0 to n minus 1 x of n exponential minus j 2 pi n k over n. Now that's your definition of the discrete Fourier transform. Now we break it
into even and odd samples. Suppose x of n was some n length sequence. Now we will be breaking this x of n because it's a decimation in time. So we will be breaking it into even and odd terms. So n even कर देते हैं and n is moving from 0 to n minus 1. X of n exponential minus j 2 pi nk over n plus odd samples of n, again between 0 to n minus 1, and x of n exponential minus j 2 pi nk over n. Agreed? Any confusion in this? Just splitting x of n into even and odd indices. And now for even indices, we are saying that n is equal to 2r, just a change of variable. And for odd indices, we are saying n is equal to 2r plus 1. So when n is between 0 to n minus 1, r will be moving from 0 to n over 2 minus 1. Here again, r will be moving from 0 to n over 2 minus 1, half of the samples. So as a result of that, we can write our x of k. Now we are changing the variables. R is between 0 to n over 2 minus 1. That would be x of 2r. Now this n is replaced with 2r. Exponential minus j 2 pi. N is replaced with r, 2r, k divided by n plus r is equal to 0 to n over 2 minus 1. X of 2r plus 1 exponential minus j 2 pi 2r plus 1. Now this n is replaced with 2r plus 1 k divided by n. कोई कारनामा नहीं किया, just replace the variables. N is replaced with 2r in these terms and n is replaced with 2r plus 1 for the odd terms. Nothing else. Now just saying that this portion, ये even portion जो है आपका, ये even indices जो हैं, even points of x of n जो हैं, इनको हम क्या देते हैं? Suppose this is g of r, और जो odd terms हैं, odd points of x of n हैं, इनको हम क्या देते हैं? This is h of r. ठीक? Now let's see, it's not a division sign नहीं है. ठीक हो गई बात? Okay. Now let's rewrite this x of k. So x of k will be equal to r is equal to 0 to n over 2 minus 1. Now this x of 2r will be replaced with gr. This is gr exponential minus j 2 pi. There was 2r term previously. Now I write this as 2 pi rk divided by n over 2. I can write it plus r is equal to 0 to n over 2 minus 1, and now x of 2r plus 1 in this portion will be replaced with h of r exponential minus j 2 pi rk over n by 2, and there is one more term which is associated with this minus j 2 pi k over n plus 1 है यहाँ पे, so that term will come out of it. So that term is exponential minus j 2 pi k over n. ये टर्म जो है इसको हम
जी, any questions? Sharos, everything is clear? जी सर. Okay. Now, what's this? What is this? This is n point DFT of x of n, and we have named it as x of k. Now, what is this? बेटा कुछ तो बोल दो, गलत ही बोल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले तो सही. Sir, n over 2 point DFT of g of r. Great, zabardast. This is n over 2 point DFT of g of r, and we are naming it as g of k, and this term is n over 2 point DFT of h of r, and we are naming it as h of k. So pictorially, what's happening? So we are taking x of n, we are splitting it into g of r and h of r, nothing but just the even indices, samples, and odd indices. Then we are taking the n over 2 point DFT of g of r, which is g of k, and we are taking the n over 2 point DFT of h of r, which is h of k. What else we are doing? Now we are multiplying with this term. H of k is being multiplied with this term, which is exponential minus j2 pi k over n, and then we are getting your x of k. Any confusion, any misunderstanding in interpretation of this equation x of k into this figure? सर e raised to power minus j2 pi k over n जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब रियल लाइफ में? एक्सपोनेंशियल है, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म्स आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. It is, in fact, it is cosine, what you call it, cosine 2 pi k over n, k is a number, n is a number, so this would be a number. Cosine यानी e raised to power j theta minus j theta क्या होता है? Cosine theta minus j sin theta. अब ये exponential minus j2 pi k over n, for k is equal to 0, it would be exponential minus j0, that would be equal to 1. For exponential, suppose k is equal to 1 है और n 8 point DFT की अगर हम बात कर रहे हैं, तो in that case that would be exponential minus j 2 pi over 8, that would be exponential j minus pi over 4, that is cosine pi over 4 minus j sine pi over 4. So what it would be? Some number. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है बट इट्स अ नंबर. ठीक, तो आप ये नंबर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे इस h of k के साथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग x of k. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग. x of k इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. ठीक है ना? जब भी आप अपना FFT, कभी इसमें मैटलैब में FFT कैलकुलेट किए? जी सर. आपने उसको देखा है कि वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है? सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब किसी रियल लाइफ में हम अगर किसी चिप पे मतलब अपना ही सर्किट बना रहे हो तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना?
हाँ बेटा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है? वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, बट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस, ठीक? कि उसको Okay, sir. मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से करने हैं। बेसिकली दिस इज अ थिंग, कॉम्प्लेक्स जो है वो ये चीज है, ऐसे ही है ना, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ रखी है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस वजह से इन्वेंट हुए थे या इंट्रोड्यूस किए गए थे? बिकॉज the numbers couldn't be represented on this real line, on this line. That was the reason कि आपको एक और एक्सिस जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ गया था। Okay, ठीक sir. है ना? तो बेसिकली दैट वाज द थिंग कि ऐसे नंबर्स जो हैं, अब ये जे वाली टर्म्स जो है वो जरूरी रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके पास अगर डिजिटल सिस्टम्स में दो अरेज हैं, एक को आप कह रहे हैं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट योर रियल टर्म्स एंड दिस इज स्टोरिंग योर इमेजिनरी टर्म्स, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, सो अगर तो रियल नंबर है तो इमेजिनरी टर्म्स सारी की सारी जीरो आ रही होंगी और सारे नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टोर हो रहे होंगे। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स जब आप डिजिटल सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और अगर इमेजिनरी टर्म्स हैं तो कोई उसमें a प्लस जे बी लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज माय रियल अरे ऑफ नंबर्स एंड दैट्स माय कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ नंबर्स, ठीक है? और फिर आप उसके साथ अगर a प्लस जे बी इंटू सी प्लस जे डी अगर आपने करना है तो यू कैन मल्टीप्लाई इट। ए बी को ए और ए, ये ए की अरे होगी, ये बी की अरे होगी, आप सी की अरे ले लेंगे और फिर डी की अरे ले लेंगे। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू these are the Cartesian coordinates. You can convert it into your phasors and you can do the multiplications. Even you can do it in your Cartesian coordinates as well. There is no such thing as J, as you are saying yourself, कि इस तरह की कोई चीज अवेलेबल तो नहीं है systems में, but you can do your operations in digital systems. Hope I have answered your question. जी sir. Okay ji. Any questions regarding this? No, sir. Okay. Now my question is that g of k is n over 2 point DFT. So it is defined from 0 to n over 2 minus 1. H of k is n over 2 point DFT, again is defined between 0 to n over 2 minus 1. What about x of k? X of k is n point DFT and that is defined so between 0 to n minus 1. Now how is it possible that two things, it is, अब अगर हम देखें तो x of k क्या चीज है? X of k is nothing but g of k plus exponential minus j 2 pi k over n into h of k. Now these two things are defined between 0 to n over 2 minus 1. This is defined between 0 to n over 2 minus 1. Now how is this possible that this thing is defined between 0 to n minus 1? Any idea? Suppose I am after 4 point DFT. X of k जो है मेरा, I have to get x of 0, I have to get x of 1, I have to get x of 2, I have to get x of 3. Now x of 0 is what? G of 0 plus e raised to power minus j 2 pi into 0 divided by 4 into h of 0. Okay, this was defined because this is between 0 to 2, rather it is 0 to 1. It is 0 to 1 for a 4 point DFT. If this is 4 point DFT, sorry 4 point sequence है तो that would be 4 point DFT. That is h of k जो है ये भी 0 से 1 तक है। अब आते हैं यहाँ, so g of 0 is present, h of 0 is present, g of 1 plus e raised to power minus j 2 pi 1 divided by 4 h of 1, that is present. Now this demands
GF2. Do we have GF2? Sheroz, यस सर। सो रहे थे? नहीं सर, वो मेरा ना कोई नेट का इशू आ रहा है, वो कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, उस वजह से ना वो मैं देख रहा हूँ कि उसको किस तरह सॉल्व करूँ। अच्छा चले, आप तो फिर अपना मसला सॉल्व करें, इस मसले में तो आप फिर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। जी उसामा CR, मेहरताबा, यस सर। जी बेटा। सर मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर GF2 नहीं होगा। तो फिर क्या करें? या इधर की रिक्वायरमेंट तो यही है, एक्सपोनेंशियल माइनस J2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू HF2। दैट्स द रिक्वायरमेंट ना। XF2 के लिए मुझे यही चाहिए और XF3 के लिए मुझे ये चाहिए, GF3 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस J2 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 HF3। नाउ माय प्रॉब्लम इज that this GF2, HF2, GF3, HF3, which is not present here as per simple definition of GFKs and HFKs, they are not present. What to do in this case? The question is this. सर फिर फर्दर डिवाइड कर दें इसको। There is one thing associated with this X of omega, yeah, X of exponential j omega, which we have been talking so many times. This is my DTFT. What is the property of DTFT? Because यहीं से ही हम X of K में आ रहे हैं ना, just the samples of this X of K. What about this DTFT? This is evaluated on the Z transform, evaluated on the unit circle. Mehrtaba, I'm talking to you. यस सर। ठीक है? It is evaluated on this unit circle. So what is the property of DTFT? It is periodic. We have been talking about this periodicity of DTFT so many times. It is periodic with period 2 pi. And now X of K are the samples. Suppose we are taking 4 samples. So क्या हो जाएगा? ये मेरे 4 सैंपल्स हैं। सपोज दिस वाज एक्स, इसको एक्स नहीं कहना चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ जी कह देता हूँ। सपोज दिस इज माय GF0, दिस इज माय, इस केस में एक्स ही कह देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो जाए। एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3। सो द नेक्स्ट सैंपल्स विल बी एक्स ऑफ x of 4, that is equal to x of 0. So when we are taking this G of 0, it means G of 0 and G of 2 are the same thing. G of 1 and G of 3 is the same thing because G of K is periodic with period n over 2. H of K is periodic with period n over 2. So we can write that G of K plus n2 is equal to, by definition, is equal to G of K, and H of K plus n2 is equal to H of K. So we will be using these equations. So the value of GK for between n over 2 से n minus 1 तक जब आप जाएंगे, and the values of H of K for n over 2 to n over 2 and n minus 1 तक, they are the same actually, जो कि 0 से n over 2 minus 1 तक हैं, और duplications हैं of the values we have already obtained between
जी ऑफ 0 से लेके n over 2 minus 1 तक. Any questions, any confusion about that? उसामा, सीआर, मीटिंग स्टार्ट करके चले गए हो कहीं? बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो यार बोलते रहो ना साथ साथ, कोई बोलने में कोई सर पैसे आप लगते हैं? उसामा का नाम ले रहे चलो सर, कोई आप बीच उसामा में का नाम कोई ले तो बोले, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। चले चल, शुक्र है जी। मेरे ताबा, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर, आ गई है समझ। चल ग्रेट, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सपोज इसको हम दोबारा से पिक्टोरियली देखते हैं कि सपोज मेरे पास x of n है, I have n points, suppose मेरे पास 16 point x of n है, so in that case what's happening, I am splitting it into okay, so I'm splitting it into even indices which are n over 2 points coming here, or 1 2 3 4 5 6 7 8, and this is my n over 2 point DFT. ओके, एंड ऑफ कोर्स यहाँ से बाहर जो पॉइंट्स निकल रहे हैं वो भी ओके, एंड वी विल बी कॉलिंग दिस एज gf0, gf1, gf2, and this is my gf7 because that was an 8 point DFT. Similarly for odd indices, again we will be having and of course this is my hf0, hf1, hf2, and so on, and this is my hf7. So the points I'm interested in, because it's an n point and n is equal to 16 here, so in that case I'm interested in getting 16 point DFT, which is x of 0, x of 1, x of 2, x of 7, x of 8, x of 9, and x of 50. These are my 16 points DFT, and I have to get it from these G's and H's, which we have already, block diagram format is there. Now what we will be doing for x of 0, it is G of 0 this is G of 0 plus H of 0 multiplied with exponential minus J 2 pi k0 है divided by 16, and that's it. This is my x of 0. For G of 1, H of 1 multiplied with exponential minus J 2 pi into 1 divided by 16, and that is being added here.
For x of 7, that would be g of 7 plus h of 7 into exponential minus j2 pi 7 divided by 16 and this thing. Now for x of 8, what will happen? जी मेहताबा अब क्या होगा? सर वो x of 0 के इक्वल होगा. x of 0 के इक्वल नहीं होगा. दोबारा देखिए क्या x of 0 के इक्वल सर है? उसके कोफिशिएंट्स. जी तो फिर क्या करें? x of 8 बनाने के लिए I will be taking g of 0 plus h of 0, but that is being multiplied with exponential minus j2 pi into 8 divided by 16, and that is being added here. So that's the difference. Okay? And similarly, if I'm going for x15, in that case, g7 will be used. That would come over here, and you will be taking h7. That would be multiplied with exponential minus j2 pi 15 divided by 16, and that is being added to this x50. So of course I have left the remaining, you know the concept. So that's my 16-point DFT. I have started with 16-point samples x of n, and then I have divided it into two 8-point DFTs, and from two 8-point DFTs I have obtained a 16-point DFT. Any questions, any query? No, sir. No. Great. So that's we were doing with. So let's move further. And now as I said कि n over 2-point DFTs को हम आगे break करेंगे. Those will be broken in n over 4-point DFTs, and n over 4-point DFTs will be broken into n over 8-point DFTs, and the process is repeated until we get to a position where we need to calculate a 2-point DFT. And 2-point DFT जो है वो आपका basic unit होगा इस FFT calculation में. So let's talk about this 2-point DFT. What is it? Okay. So x of k (0 to 1) because it's 2-point, x of n exponential minus j 2 pi n k divided by n, और n जो है इस केस में that's equal to 2. Now x of k can be written in this form because x of n is equal to x of 0. I'm just opening up this summation. Exponential minus j 2 pi, for n is equal to 0, that term will be 1, so cancelled, plus x of 1 exponential minus j 2 pi k over 2. So for different values of k, x of 0 is, now k is equal to 0, so that would be x of 0 plus, for k is equal to 0, that would be changed into 1. So x of 0 plus x of 1, and for x of 1, that's equal to x of 0. For k is equal to 1, it is exponential minus j pi, and exponential minus j pi is equal to cosine pi minus j sine pi, and that's equal to minus 1. So this is x of 1. So ये मेरा 2-point DFT है. Any block
there is a block, something is happening inside, x of 0 और x of 1 जो है इसके अंदर जा रहे हैं, and x of 0 plus x of 1 which is nothing but ये चीज जो है that is capital X of 0 है, और जो चीज x of 0 minus x of 1 है that is nothing but x of 1, capital X of 1 है. Questions? No question, sir. Okay, now I have these 8-point DFTs and over 2-point DFTs. Now I will be using or splitting these n over 2-point DFTs into 2 n over 4-point DFTs. So let's move there. So I have done it. So अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो इंडिसेस आ रहे थे, यहां पे जो इंडिसेस आ रहे थे वो क्या थे, x of 0 था, x of 2 था, x of 4 था, all the even indices, और यहाँ पे आपके पास x of 1 था, x of 3 था, x of 5 था, and all the odd indices x 15 तक. ठीक, अब मैं इस पोर्शन को ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस अपर पोर्शन विच वाज द इवन इंडिसेस, और अब मैं इसको दोबारा स्प्लिट करने जा रहा हूं. सो कैसे स्प्लिट हो रहा है ये, इनफैक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. ओके, नाउ ये मेरे पास इंडिसेस थे 0 1 2 3 4 5 6 7, और अब आपके पास जो ऑड इंडिसेस हैं, अब द डमी इंडिसेस हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं. एक्चुअली तो आपके पास सारे इवन इंडिसेस थे अपर पोर्शन में, बट नाउ अगेन डमी इंडिसेस में वो 0 1 2 3 उनको कर दें तो 0 2 4 6 1 3 5 7, अब ये इवन और ऑड में फिर स्प्लिट हो गया. ठीक है, 8-point DFTs को अगर हम लेते हैं तो, बल्कि इसको उसके साथ कनेक्ट ही ना करें, सपोज करें वी आर स्टार्टिंग इट 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास ये 0 2 4 और 6 जो हैं ये इवन हो जाएंगे, और 1 3 5 और 7 जो हैं ये आपके पास वो ऑड हो जाएंगे. अगेन आपने n over 2 पॉइंट, अगर हम 8 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो n over 2 पॉइंट DFT जो है ये आपका 4-point DFT हो जाएगा, ये आपका 4-point DFT हो जाएगा. सो यू आर मेकिंग G0 G1 G2 and G3 and H0 H1 H2 and H3. And as a result of that, you are making x0, which is nothing but g0 plus exponential minus j2 pi k n over n into h of 0. And how this is replaced with this exponential minus j2 pi k over n जो है वो WNK है. वो कैसे है? Because this is a twiddle factor that was defined in chapter number 8, that exponential minus j2 pi over n will be written something like this, WN. This is called twiddle factor, and just a notational इसकी वैल्यू है, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं. एंड यू कैन सी के एक के एडिशनल टर्म्स यहाँ पे मौजूद है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट WNK. सो सिंप्लीफाइड हो जाता है कि एक्सपोनेंशियल माइनस j2 पाई k ओवर n लिखने के बजाय अगर हम उसे WNK लिख दें. सो फॉर k is equal to 0 that would be WN0. So WN0 is here. For x1 is equal to g1 plus ये डुप्लीकेशन हुई है, इसको फिर ईज नहीं होने चाहिए. Okay, so WNK, and this time k is equal to 1, so WN1. Similarly for x4 में आपके पास अब g4 नहीं है, but we know that it is periodic with period 4, so g of 0 जो है वो g of 4 के इक्वल है, so x of 4 will be equal to g4 plus exponential minus j2 pi k over n. This is WN, तो ये क्या हो जाएगा
WN, अब अगर इसको मैं रिप्लेस करना चाहूं तो दैट वुड बी WNK, and K is equal to 4 in this case, so you can see that it is WN4. Similarly you can extend this term. इससे रिलेटेड कोई भी आपको चीज नजर आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क. सो वी हैव स्टार्टेड दिस. इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. Rather we have started a new example and that's a 8 point DFT. और 8 point DFT हमने कैलकुलेट किया है जिसमें इवन इंडेक्सेस ऊपर चले गए हैं, ऑड इंडेक्सेस नीचे आ गए हैं, as we did previously. So this is a 4 point DFT, this is a 4 point DFT. We are calculating G0 से G3 तक, H0 से H3 तक, and using these G's and H's and these twiddle factors we are actually finding X0 से लेके X7 तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं. Any confusion या कोई मसला मसाइल हो तो प्लीज आस्क. हमजा मुबशिर बैठे हुए हैं? शहरोज, उसामा, इशू, हैं जी? उसामा के कनेक्टिविटी का इशू है, उसने कहा था सर को बता देना अगर पूछे. अच्छा, तो कोई बैठा हुआ है आपका? अब हमजा मुबशिर साहब को चेक करें, जो भी साहब हैं, नाम मुझे नहीं आ रहा. देखिए हमजा मुबशिर साहब बैठे हुए हैं. जी सर बैठे हुए हैं. हमजा मुबशिर बेटा, उनको मैसेज करें, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है. ओके सर. जी हमजा, नेट खराब है? फातिमा, जी सर. जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो मैं स्टार्ट से दोबारा सुनूंगी तो मुझे समझ आएगी. खोखर साहब, उस्मान, GC उस्मान 774. सारे सो रहे हो? जी उस्मान, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर. चलें आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से ये 8 पॉइंट DFT बनाया गया. सर इसके अंदर सबसे पहले तो हम इवन और ऑड में इसको डिवाइड कर देते हैं. इवन वाले ऊपर लिख देते हैं और ऑड वाले नीचे. फिर उसके ठीक है. बाद हम अगर 8 है जरूरी तो नहीं है सेपरेट हो वैसे, जाएगा बाय द क्योंकि वे, एक मिनट उस्मान, जरूरी नहीं है कि इवन वाले ऊपर लिखें या ऑड वाले नीचे लिखें. अब आप इवन भी नीचे लिख दें और ऑड ऊपर लिख दें, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इवन अलहदा किया है और ऑड अलहदा किया है, और ये डेसिमेशन इन टाइम है, तो जो स्मॉल एक्स वाले जो सैंपल्स हैं टाइम डोमेन वाले, उनको हम स्प्लिट कर रहे हैं. ठीक है, आगे चलें. गुड, शाबाश. यस सर. और उसके बाद n/2 पॉइंट DFT करते हैं, तो अगर 4 है तो वो 8 है तो वो 4 हो जाएंगे. ठीक है. और उसके बाद अब हम आगे जो है इसके जिस तरह हम क्योंकि GK और HK लिखा होता है तो इधर हम उसकी K की वैल्यूज डाल देंगे. G0, G1, G2, G3 ये आ गया. और उसके बाद जब हम इसकी आगे अब x of K निकालना है, तो जब हम x of 3 तक जाते हैं वो तो आ जाती हैं. तो उसके बाद अब आगे x of 2 तक, तो उसके बाद जब G of 3 निकालेंगे तो उसका नहीं, तरीका X जो of है 3 कि तक हमने जिस ठीक तरह कहा देखा था. था X of 3 तक ठीक कहा था आपने कि G of 3 x प्लस, of 3 तक. जी जी, और x बिकॉज of 4 का फिर वही तरीका है कि हम x of 4 का है कि हम G of 0 से एक पॉइंट ले आएंगे, एक लाइन ले आएंगे,
और दूसरी हमने इधर से लानी है कि एच एफ जो है 0 से ले आएंगे, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर माइनस जे 2 पाई 4/8 कर देंगे, तो इससे हमारे पास x4 आ जाएगा। और इसी तरह हम आगे जाते रहेंगे और इस तरह हम x7 तक चले जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग एवरीथिंग। इसमें एक छोटी सी चीज है, आपने कहा है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, रादर ऑल दीज एचएस जो हैं, एच एफ केज आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद दीज टर्म्स, डब्ल्यू एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जब एच एफ जीरो Yes, sir. डब्ल्यू एन जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जी एफ जीरो एड हो रहा है तो एक्स एफ जीरो बना रहे हैं। और जब एच एफ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू एन फोर के साथ और जी एफ जीरो एड हो रहा है तो एक्स एफ फोर बना रहे हैं। वाई? बिकॉज एच एफ के इज पीरियोडिक विद पीरियड एन ओवर टू। सो एच एफ जीरो और एच एफ फोर जो है वो सेम चीज है, और जी एफ जीरो और जी एफ फोर जो है वो भी सेम चीज है। So that's why XF4 is actually equal to GF4 plus WN4 HF4, but here we are not seeing anything as GF4 and HF4. That's why we are taking GF0 and HF0, because GF0 and GF4 and HF0 and HF4 are the same values. ठीक है उस्मान? Yes, sir. Thank you बेटा, thank you very much. चले आगे चलते अगर हैं। हमारा Okay. जी बोलें। सर अगर हमारा सिग्नल जो है वो अगर इवन और ऑड में मतलब इक्वली नहीं हो पाए डिवाइड, तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। 0 पे ऐड कर दें। यस, गुड, शाबाश। ओके ओके, सपोज इसी कॉन्टेक्स्ट में जो बात आपने की है, सपोज अगर आप कभी मैटलैब पे बैठे हों और आप कहें कि मेरा एक्स ऑफ एन जो है वो है जी 1 2 and 3, ठीक। अगर आप कहते हैं कि मुझे एक्स ऑफ के चाहिए विच इज जस्ट द एफएफटी ऑफ दिस एक्स ऑफ एन, क्या करेगा मैटलैब? मैटलैब खुद से जीरो पैड करते हुए वो इस एक्स ऑफ एन को उसके पॉइंट्स निकाल के दे देगा। यू हैव द ऑप्शन, एक्स ऑफ एन आपका 1 2 3 है, आप कहें कि मुझे 16 पॉइंट एफएफटी चाहिए, तो मैटलैब 13 जीरोस ऐड करेगा और आपको 16 नॉन जीरो एक्स ऑफ के की वैल्यूज दे देगा। और जब आप दोबारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे उसका और एक्स ऑफ के डालेंगे उसके अंदर कमांड के अंदर, तो आपको एक्स ऑफ एन मिलेगा 1 2 3 एंड ऑल एक्स्ट्रा जीरोस। ठीक है, इसको करके देख सकते हैं आप एनी टाइम, अगर आपके पास मैटलैब इंस्टॉल्ड है तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो कि आजकल आप देख रहे हैं, विच इज एफएफटी एंड डीएफटीज। Okay, now the 4-point DFTs. Now let's see that this block which were having the even indices, now this 4-point DFT will be split into two 2-point DFTs. So अब देखिए even जो है आपका इस केस में ये मेरे even है और ये अब odd हो जाएंगे। So अब ये dummy indices हैं 0 1 2 3 because I'm taking this block. So 0 और 4 even हैं और 2 और 6 जो हैं वो मेरे odd indices में convert हो गए। So x of 0 और x of 4 में ले रहा हूं, again 2-point DFT है। So what will happen? We have already talked about 2-point DFTs. What we are doing, ये मेरा 2-point DFT था, x of 0 plus x of 1 and x of 0 minus x of 1. So what is being done here? Again we are calculating some intermediate values a0, a1, b0, b1. So what is G0? G0 is A0 plus Wn over 2 0 B0. Why Wn over 2? Because इस equation को देखिए, this is similar to the equation. This equation is similar to the equation we have already written in the form of x of k's. And what was that? मैं यहीं आपके सामने लिख देता हूँ so that के now हमने लिखा था x of k that was between r is equal to 0 to n over 2 minus 1 when we were splitting it into, and we said that it is g of r exponential minus j 2 pi r k over n over 2 plus exponential minus j 2 pi k over n, r is equal to 0 to n over 2 minus 1 h of r exponential minus j 2 pi r k over n over 2. So that was my x of k.
n over 2 point DFT of GFR, n over 2 point DFT of HFR, and that was being multiplied with this term. Now let's look at this. निचले level पे जा रहे हैं. Now we have to calculate G's. G कैसे calculate हुआ है? G of K's कैसे calculate हुए हैं? G of K is equal to dummy variable यहाँ पे R था, यहाँ पे हम A लेके आ गए. A is between 0 to n over 4 minus 1. Here it was n over 2 minus 1. We were splitting an n point sequence into two n over 2 point sequence. Here what I'm doing, I am splitting this n over 2 point sequence into two n over 4 point sequences. So A is between 0 to n over 4 minus 1. Alpha of A, it was G of R, यहाँ पे मैं उसको alpha of A कह रहा हूँ, exponential minus J2 pi A K divided by, यहाँ पे n over 2 था, यहाँ पे n over 4 आ गया. The common term was exponential minus J2 pi K over n. Here the common term is exponential minus J2 pi K over n over 2. Then A is between 0 to n over 4 minus 1. Beta of A, here it was h of R. यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बीटा ऑफ ए या बी ऑफ ए एक्सपोनेंशियल माइनस J2 pi A K over n over 4. Here it was n over 2. So G of K's are actually two point DFTs of alpha of A and beta of A, and as a result of that you are getting G of 0 के लिए आप यहाँ इसका that would be A of small A of 0, A of 1, B of 0, B of 1 यहाँ से बन रहे होंगे. Similarly, जैसे हमने पिछली ब्लॉक डायग्राम्स पे काम किया है, the important thing is this twiddle factor, exponential minus J2 pi K over n over 2. That's equivalent to W n over 2K, because exponential minus J2 pi over n जो है, that's equal to Wn. Exponential minus J2 pi over n over 2 जो है, that's equal to Wn over 2. और जो K का फैक्टर है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से K जो है वो ऊपर आ रहा है. So it is Wkn over 2. So G0 के लिए क्या हो जाएगा? A0 plus Wn over 2 0 B0 because K is equal to 0. G1 क्या हो जाएगा? That would be equal to A1 plus Wn over 2 1 into B1. Similarly, G of 2 will be equal to A2 plus Wn over 2 B2, but we don't have A2 and B2, but we know that it is periodic, so that's why we are using A0 and B0 for G2, and we are using A1 and B1 for G3. Questions, please. सर अगर हमने 8 पॉइंट्स को स्प्लिट करना हो तो फिर हम n/4 की जगह n/8 हो जाएगा. अगर हमने क्या करना हो सर 8 पॉइंट्स को, अभी हमने 4 पॉइंट्स को 8 पॉइंट को कर रहे हैं. ये हमने नो सर 8 पॉइंट को स्टार्ट किया था, स्प्लिट किया दो 4 पॉइंट्स में. अब एक 4 पॉइंट को उठाया, उसको दो 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरह से इसको दो 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे. एंड हमने कहा है कि जो 2 पॉइंट डीएफटी है, दैट इज आवर बेसिक यूनिट. नहीं सर, जिस तरह आपने वो पिछले एग्जांपल में 16 से स्टार्ट किया था, n is equal to 16, तो हम 16 से करते हैं तो पहले 8 हो जाएंगे, तो फिर हम 8 को दोबारा करेंगे तो वो 2 4 में आएंगे, तो वहाँ n/8 लिखेंगे. जी जी जी, ये देखिए. ठीक है ठीक, सर. अच्छा गुड, मैं समझ गया हूँ आपकी बात. देखिए आपने स्टार्ट किया 16 पॉइंट से, तो ये n इज इक्वल टू 16 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 8 पॉइंट. यस सर. दैट वुड बी 8 पॉइंट. अच्छा 8 पॉइंट के ये जो जाएंगे, सॉरी चलें इसको यूं कर लेते हैं. 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है. यस सर.
गॉट इट? दैट्स द बेसिक। Yes, sir. इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे दो पॉइंट्स जो हैं ये निकल रहे हैं, हर 2 पॉइंट से आपको ये 2 ब्रांचेस मिल रही हैं। एंड फाइनली you started with x of n, so ultimately you will be having x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 14 and x of 15. Got it? Yes, sir. Okay. That's the situation. Everything is clear that how the 4-point DFTs is converted into 2-point DFTs or 2n/4-point DFTs. And finally, now this is the situation that I mean incorporating these things, that the upper block splitting and the lower block splitting has been done, and now we have got 2-point DFTs. So x0, x4, x2, x6, x1, x5. In fact, ये जो चीज आपको ये backward वो breaking हो रही है. So 8-point DFTs के लिए पहले आपने बनाए 4-point DFTs और 4-point DFTs से आप 2-point DFTs में जा रहे हैं. So क्या हुआ? x0, x4 ये आपका अपर ब्लॉक है, फिर आप जाएं x2, x6 ये आपका ये ऑड ब्लॉक है जो कि अपर ब्लॉक की स्प्लिटिंग की है. इस ब्लॉक की स्प्लिटिंग करते हुए हमने ये 2 ब्लॉक्स बना लिए, और लोअर ब्लॉक की स्प्लिटिंग की है जिसमें आपके पास ऑड इंडेक्सेस थे एंड ऑड इंडेक्स से 1, 3, 5, 7 थे, तो 1 and 5 इवन हो जाएगा, 3 और 7 ऑड हो जाएगा. सो 1 and 5 even and that 3 and 7 odd. So this is even, odd, even and odd. So n/4-point DFTs. And one more thing, चलो ये हो गया. Now let's talk about this 2-point DFT के बारे में हम बात कर रहे थे, and या n/4-point DFT के बारे में जो हमने बात की. Let's look at this. So x0 और x4, just we are talking about this portion. x0, x4, और यहाँ पे हमें पता है कि हमें मिल रहा है x0 plus x4, और इस डॉट पे हमें मिल रहा है x0 minus x4. ओके, सो लेट्स सी के अंदर इस ब्लॉक के अंदर जो है वो क्या चीज है. So that's the basic structure of 2-point DFT. x0 and x4 are going in, और wn0 जो है that is equal to 1. Why wn0 is equal to 1? Because it is equal to exponential minus j2 pi 0 divided by n. जितने पॉइंट भी हो n के जितने भी वैल्यू हो, it is exponential j0 and that's equal to cosine 0 minus j sine 0 and that's equal to 1. So this is it. x0 multiplied with this wn0 doesn't make any difference, so that's equal to plus x4. और अगर आप इसकी जो निचली वाली ब्रांच है उसको देखें तो वहां पे आपको नजर आ रहा है w -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट्स इक्वल टू wn/2. यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स डिफरेंट टर्म में लिखा हुआ है, इट्स इक्वल टू wn/4-point DFT है, तो इनफैक्ट wn/4 1, which is nothing but equal to wn4, and that's equal to -1. So आपको मल्टीप्लिकेशन जो है -1 वाला साइन जो है वो आपको इधर नजर आ रहा है. ओके, आगे चलते हैं. तो अब आपने ये वाले अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखें. ये मेरे पास 8-point DFT था जिसको मैंने ब्रेक किया है. That's just the another format of this thing. ठीक, x0 x4, इस पॉइंट पे मुझे x0 plus x4 मिल रहा है, इस पॉइंट पे मुझे x0 minus x4 मिल रहा है. ओके, ये मेरे पास एक बेसिक यूनिट आ गया. फिर x2 और x6 के साथ बेसिक यूनिट, फिर x1 और x5 के साथ 2-point DFT का बेसिक यूनिट, x3 और x7 के साथ बेसिक यूनिट. ठीक होगी बात. और इसी तरह से बाकी पिछले हम कर चुके थे. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस रेगुलर स्ट्रक्चर इज, सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि ये मेरे पास n-point DFT यहाँ पे हो रहा है.
तो x0 के साथ ये देखिए wn0, x1 के साथ wn1, x2 के साथ wn2, x3 के साथ wn3 और x7 के साथ wn7. सो दिस रेगुलरिटी इन द स्ट्रक्चर एंड ये जो ट्विडल फैक्टर्स हैं इनके अंदर जो कॉम्बिनेशन है इनका, ये जरूर देखने वाली चीज है. अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास n/2 पॉइंट DFTs हैं, n/2 पॉइंट DFTs हैं, बट एक्चुअली दिस इज wn/2 के ये पॉइंट्स हैं, बिकॉज इट्स n/2 पॉइंट DFTs, बट wn2k हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज व्हाट, एक्सपोनेंशियल माइनस j2 pi k over n/2 इज इक्वल टू wn/2k. लेकिन इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं, एक्सपोनेंशियल माइनस j2 pi into 2k divided by n, which is equal to wn2k. So it is written in this form. So क्या होगा n/2 point DFTs में, but they are n/2 point DFTs. So what's happening here? n/2, it is in fact wn/20 है, which is actually equal to wn0. ठीक है, ये 2 अगर ऊपर चला जाता है doesn't make any difference. जो अगली टर्म है that is wn/2 1 है, because k is equal to 1 here. So this can be written as wn2. ये 2 जो है ये ऊपर चला गया है. The next term is wn/2 2, which is equal to wn4. So that's written here. And the next term is wn/2 3, for k is equal to 3, which is equal to wn6. And then again the repetition of all these, wn0, wn2, wn4, wn6. और इधर अगर आप देखें ये सारे 2 point DFTs हैं या n/4 point DFTs हैं. So in this base जो आपकी है ये क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, wn/4k, या हम इसको लिख सकते हैं wn4k. So for this term it is wn for k is equal to 0, wn0. ठीक है, for ये सारे wn0 ही जा रहे हैं. फिर यहाँ पे सारे wn4 आ रहे हैं. Why? Because यहाँ पे wn आपका 4k, for k is equal to 1, it is 4, so for wn4 and rest repetition है क्योंकि तो वो इसी तरह से wn0, wn4, wn0, wn4, wn0, wn4. So any questions regarding this? So these 4.8 point DFTs, 4 point DFTs, 2 point DFTs, और इस तरह से ये repetitions जो हैं ये चलती जाएंगी हमारे पास. And how these values are calculated, I have explained it here. Any queries, any confusions? No sir. Okay, great. अच्छा, अब जरा इसको देखें, ये जो बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट है, देखिए ये एक बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट है, ये बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट है. अब देखिए रेगुलरिटी है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर. अगले लेवल पे जाते हैं तो ये देखिए एक ये चीज पड़ी हुई है, फिर इसी तरह से ये चीज पड़ी हुई है, सिमिलैरिटी है इनके अंदर, और इसी तरह से देखें तो ये चीज एक पड़ी हुई है. सो ये आपके पास हर लेवल पे आपके पास 4 रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं. इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बटरफ्लाई. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिसकी 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बटरफ्लाई. सो that's the general form of the butterfly appearing in all stages. That's the butterfly you said कि ये m-1 स्टेज है और फिर mth स्टेज पे आपका आउटपुट आपको मिल रही है. अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि आपके पास ये जो चीज है, द जनरलाइज स्ट्रक्चर फॉर दिस इज wnr प्लस n/2 है आपका ये जो लोअर ब्रांच है, और wnr जो है ये आपकी अपर ब्रांच है. सो जरा इस चीज को देख लेते हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं. सो लेट्स सी wn, I just repeat it again ताकि, so now wnr plus n/2, and by definition that is equal to exponential minus j2 pi over n, because wn है, और r plus n/2,
We can write it like that. So this can be written as exponential minus j 2 pi r over n into exponential minus j 2 pi n over n into 2. So what it will be, this is equal to, this portion is 2 will be cancelled with 2, n will be cancelled with n. So it is exponential minus j pi, which is equal to minus 1, and that's being multiplied with this exponential minus j 2 pi r over n. So that's why we are calling it minus w n r. ये WNR है, ये माइनस WNR है. So our butterfly can be changed as WNR को common कर लेते हैं. So that's 1 and that's minus 1. So initially this butterfly, this general form can be transformed into this improved efficient butterfly. Why we want to do it? Because इसके अंदर 2 multiplications थे और 2 additions थे. अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर 1 multiplication है और 2 additions हैं. So that's the advantage we have obtained by just having an improved and efficient structure. Okay, so now the same thing, the same 8-point DFT can be represented in this form, because WN0 था वहां पे और WN4 था. Now WN0 has been taken as common and minus 1 is placed here. Again a regularity in all this. ठीक है, अगेन फिर इसको देखें, ये मेरा 8-point DFT थे. 8-point DFT में WN0 1 2 3 4 5 6 7 लगे हुए थे, but the relationship between WN0 and WN4 is the only difference is the sign. WN0 जो है is equal to minus WN4 है, you can calculate it. So that's equal to minus इसको मैं WN0 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस टर्म में तो WN0 बाहर आ गया और माइनस 1 हमने इधर लगा लिया, बिकॉज द मेन बटरफ्लाई वाज समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे मेरे पास WN0 था और ये जो टर्म आ रही थी मेरे पास, इसके पास WN4 था. मैं इस बटरफ्लाई की बात कर रहा हूँ. सो अब आपने क्या किया है, अब आपने ये किया है कि इस बटरफ्लाई को यहाँ पे आप WN0 ले आए हैं and as a result of that इधर -1 कर दिया और इधर 1 कर दिया this butterfly. So that's the thing which have been done in all these butterflies. Any questions? No, sir. Oh, great. So how many times should I decompose to reach 2-point DFTs? अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, that was an 8-point DFT. तो how many times we have to decompose to reach 2-point DFTs? We have to, in this case, you will be seeing that it's 2 times. But actually, generalized terms में अगर हम बात करें तो it is log to the base 2 n minus 1. N is equal to 8 है, तो log to the base 2 8 is equal to 3. 3 minus 1 is equal to 2. So इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के लिए आपको 2 दफा डिकम्पोज करना पड़ा है. तो 8 को 4 में और फिर 4 को 2 में, तो आप इस स्टेज पे पहुंचे. Agreed? For a 16-point DFT, we need to decompose the sequence 3 times to reach 2-point sequence. Okay, 2 8-point sequence होंगे, then 4 4-point sequences होंगे and 8 2-point sequences होंगे. Okay, how many stages? Actually किसी भी DFT के अंदर log to the base to n stages होते हैं. So इसमें आपको कितनी stages नजर आ रही हैं? Actually this is one stage, other stage, ये एक और stage. So 8-point DFT में आपके पास log to the base to n stages हैं, 3 stages हैं आपके पास. इसी तरह से 16 में अगर आप जाते हैं तो आपके पास 4 stages होंगी, log to the base to 16, that is 4. 32 पॉइंट्स के लिए जाते हैं तो आपके पास 5 स्टेजेस होंगी, 64 के लिए आपके पास 6 स्टेजेस होंगी, इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे. हाउ मेनी बटरफ्लाइज इन ईच स्टेज? एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हर स्टेज में 4 नजर आ रही हैं, बट एक्चुअली जनरलाइज्ड टर्म्स में इट इज n/2. n is 8, so 8/2, 4 बटरफ्लाइज आपको नजर आ रही हैं हर स्टेज के अंदर. अगर 16 होती तो आपको 8 बटरफ्लाइज नजर आती हर स्टेज के अंदर. ओके, तो जरा ऑब्जर्वेशंस जो हैं इस कंप्यूटेशन से अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड इन प्लेस कंप्यूटेशन. व्हाट डू वी मीन बाय इन प्लेस कंप्यूटेशन? आप कंप्यूटर
प्रोग्रामिंग करते हैं और आप अरे ऑफ नंबर्स आपने उठाए, सो दिस इज माय अरे ऑफ नंबर्स जिसमें आपने स्टोर किया x0, x4, x2, x6, x1, x5, x3 एंड x7, एंड एट दिस स्टेज आपने स्टोर किया और फिर आप इस स्टेज पे पहुंचे। जब आप इस स्टेज पे पहुंचे तो x4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया था wn0 के साथ, x2, x6, x5 और x7 को, और आप इस लेवल पे पहुंच गए थे। नाउ लुक एट दिस, नाउ द content of this array is changed, but we are not going to use this array which was originally stored again. इसी तरह से अगले लेवल पे आप जाते हैं विद डिफरेंट मल्टीप्लिकेशंस आपके पास हो रही हैं, तो आप वो जो अरे है वो अपडेट होती जा रही है। सो इन प्लेस कंप्यूटेशन इज दैट यू हैव स्टार्टेड विद सर्टेन अरे ऑफ नंबर्स, और फिर उस अरे को आप अपग्रेड करते जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रीयूज दैट अरे जो कि आपकी ओरिजिनल अरे मौजूद थी। सो दिस इज कॉल्ड इन प्लेस कंप्यूटेशन। पैरेलल है, यू कैन सी दैट इट्स एम्बैरेसिंगली पैरेलल स्ट्रक्चर है आपका, कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो उसी वक्त आपके ये काम भी साथ में हो रहे होंगे। सो एवरीथिंग इज पैरेलल इन दिस केस। log to the base 2 n स्टेजेस हैं इसके अंदर, n/2 बटरफ्लाई इन ईच स्टेज है। सो व्हाट्स हैपनिंग, और हर बटरफ्लाई के अंदर 2 एडिशंस एंड 1 मल्टीप्लिकेशन है बटरफ्लाई के अंदर। सो टोटल अगर n/2 बटरफ्लाइज हैं तो इन दैट केस वी विल बी हैविंग n/2 मल्टीप्लिकेशंस एंड n एडिशन फॉर ईच स्टेज। And now we are able to calculate the actual computational load for FFT, that it is n/2 log to the base 2 n mults and n log to the base 2 n adds, because total n/2 multiplications हैं and n additions हैं। Now we are saying that we have log to the base 2 n stages, हर स्टेज के अंदर आपकी ये मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं और ये एडिशंस हो रही हैं। अगर आप बात करें जो कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस फॉर k पॉइंट्स n पॉइंट DFT के लिए हमें चाहिए थी, वो n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस चाहिए थी और n-1 स्क्वायर एडिशंस चाहिए थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज n/2 log to the base 2n, which is much better than n square. Now questions please. जी शेरोज, No question, sir. how many stages? जनाब शेरोज, शेरोज आवाज आ रही है बेटा? आवाज आना बंद हो गई है। जी सर, सर अभी आई है सर। चले जी, आई एम लीविंग इट हियर बिकॉज यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। और अब हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर डेसिमेशन इन टाइम, एंड देयर इज वन थिंग लेफ्ट, बट टुमारो आई विल स्टार्ट the next class. We will be starting with decimation in frequency and then finishing. Okay जी, it's a 5 minutes break. उसामा, जो भी आपके दोस्त हैं उनको बुला लीजिए, बिकॉज चैप्टर नंबर 5 का क्विज मैं रिपीट नहीं करूंगा। आई एम गिविंग यू 5 minutes break. प्लीज आस्क एवरीवन, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है।
Okay, Usama, are you there? Should we start? जी सर स्टार्ट कर दें। Okay, इस वक्त 37 लोग बैठे हुए हैं और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 42 है। ए, 2 मिनट और वेट कर लें। सीआर आपने शेयर किया था वो जो मिसिंग क्विज वाला डॉक्यूमेंट था? नहीं सर मैं भी कर देता हूँ। बेटा ये मैंने आपको कल दिया है तो आप इसको कर देना शेयर ताकि पता चल जाए लोगों को। ठीक है सर मैं भी। ओके जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट क्योंकि मेरा ख्याल है जितने लोगों ने आना था वो आ गए हैं। Okay. This is the quiz for group 1. Just 4-5 lines, not more than that. Prove that for the bilinear transformation, a stable and causal filter in S domain is transformed into a stable and causal filter in Z domain. So these are the people. You can right side pe hain Nimra, Shanze, Shehroz, Subhas, Hussain Kamil, Samia, Osama Faisal, Zishan Ali and Zain Ali. They will be doing this group 1 quiz. Should I move forward? Shehroz? Yes, sir. Okay. This is for group 2. That how DFTs of two sequences of different lengths can be used to obtain the linear convolution. Just 2 lines and explain your answer with small example of your own. Example करने की जरूरत नहीं है, अपनी जो आपने ऊपर explain किया है उसको example के through explain कर दें कि how this would be happening. Just your own example. जी Usman, should I move forward? Khokar साहब. Yes, sir. This is for group 3. You have to find the impulse response of the linear phase low pass filter. HDF omega जो है वो given है. So low pass filter specifications हैं. And you have to get HDFN. And for n is equal to 7, आपने linear phase filter response HFN find out करना है. Again, not more than 5 minutes. If you have gone through the examples and everything. This is for group 4. 2 sequences are given and you have to perform the circular convolution such that the result is equal to linear convolution. Usama? जी सर। Usama recording बेटा ऑफ कर दें.
क्योंकि वो फाइल फिर बड़ी हो जाएगी, अपलोड नहीं हो सकेगी। ओके सर।